Hello everyone, welcome to new sessions of our biostatistical lectures. And today's topic is presentation of data. Let's begin with the types of presenting the data. In statistics, it is important to analyze and present the data. So basically, there are two methods of presenting the data. Data is either numerical or it's categorical or characteristic data. So there are mainly two methods of presenting the data. First one is tabulation and second one is charts and diagrams. Now, what is tabulation? So these are the devices for presenting data simply from masses of statistical data. A table can be simple or complex depending upon the number of measurement of a single set of or multiple set of items. There are three types of tables basically: master table, simple table, and frequency distribution table. So master table contains all data obtained from a survey or a research study. So whatever information we are collected from our research study, we gather all that information in one table. It's called as master table. So second one is a simple table. It is a one-way table which supply answer to the question about one characteristics only. So it is basically one-to-one information given by a table. And third one is frequency distribution table. Data is first split into convenient groups, and the number of items which occur in each group is shown in adjacent column, that is frequency. So here we have some raw data, then we convert that raw data into a frequency class distribution. Let us see some examples of simple table. This is the example of simple table, and which gives information about states and their corresponding states and their population. It is the data of 1st March 2011, and this is the example of frequency distribution table. The following figures are the ages of patients admitted to a hospital with poliomyelitis. So the raw observations are given here. Then we make some class intervals of age group, and according to that class intervals, we fix we simply find the frequencies from the raw data using a tally marks. Now, charts and diagrams. So let's see why diagrams are so important. Uh, Basically, difficult to understand the raw data. Tables and diagrams are easy to understand the data. So tables and diagrams visualize the nature of data. What pattern or what type of trends data shows, it shows using diagrams. We can show using diagrams. Tabulation shows overall picture of data, but the diagram shows patterns and shapes of the data. It creates a meaningful impression in mind, get across a point quickly, and sacrifice details and accuracy of data. So basically, this is the drawback of data, in which we does not given all information about our data, and the diagrams are not capable for accuracy of data. Now, before understanding the different types of diagrams, we need to understand which diagram is suitable for different types of data, like quantitative data or qualitative data set. So here, histogram, frequency polygon, frequency curve, line chart, cumulative frequency diagram, and scatter diagram. Basically, these types of diagrams we obtain for the quantitative type data or continuous type data, and bar diagram or sector diagram, pictogram, and map diagram. These types of diagrams are obtained for qualitative or discrete types of data.
Now types of data and their examples for different types of diagrams. In qualitative or discrete type data, basically we see the example like religion, gender, place or residence. So these types of data are shown in a bar diagram or pie chart. And for continuous data, the examples are height, weight, blood sugar, and this type of data is basically represent in a histogram or in a line diagram. Now number one is bar chart. Bar chart displays absolute or relative frequency distribution for categorical variables. Variables are either ordinal or nominal. These are the way of presenting a set of numbers. By length of bar, the length of bar is proportional to the magnitude to be represented. Bar charts are easy to prepare, easy to understand, and enable visual comparison. There are three types of bar charts: simple bar chart, multiple bar chart, and component bar chart. So general structure of simple bar diagram is on x-axis always we give factors that are variable factors, and on y-axis uh, we give values of particular uh, measurements. So here, hypertension, smoking, diabetes, CAD, these are the qualitative type characteristics. Qualitative data. That's why we draw a bar chart for this type of data. Here also two types of bar chart, that are multiple bar chart and component bar chart. तो मल्टीपल बार चार्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सब कैरेक्टरिस्टिक दी होती है किसी वेरिएबल के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगर देखें हम, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे पॉपुलेशन और करस्पॉन्डिंग लैंड ऑफ दैट कंट्री ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए हम दो अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे और दोनों को अलग अलग कलर्स में या फिर इंडिकेशंस में हम शो करेंगे। जैसे पॉपुलेशन को यहाँ पे रेड कलर में शो किया गया है और लैंड को यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल बार चार्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट बेसिकली इसको हम प्रोपोर्शन बार चार्ट भी कहते हैं, जहाँ पे एक ही वेरिएबल का कोई अलग अलग प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हम एक बार में शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा है और उसके हिसाब से फीमेल्स और मेल्स का प्रोपोर्शन क्या है ये हमने यहाँ पे शो किया है। Now the next type of diagram is pie diagram. So pie diagram is basically हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सर्कल। सर्कल में जो कुछ सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को। So pie charts are useful for displaying the relative frequency distribution of nominal variables. हम इसमें हमेशा nominal variables ही represent करते हैं। Consider for qualitative or discrete data, a circle is divided into different sectors, and areas of sectors are proportional to the frequencies. In this diagram, the areas of segment of a circle are compared. The area of each segment depends upon the percentage which is converted to angle, and then we draw it. Here is the example of pie chart. So here we have some type of disease and their proportion. We need to present on a single diagram. So pie diagram is very suitable for these types of data when the data is in the form of percentage, but we need to convert that percentage value into an angle value which is in degrees. That then after calculating these angles, we draw segments individually. Now the next diagram is histogram. Histogram is basically used for the
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डेटा, जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिया होता है, ये कंटिन्यूस टाइप डेटा होता है और अकॉर्डिंग उसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज हमें दी गई होती है। हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रैंडम वेरिएबल, essentially a bar diagram, but bars are drawn continuously। जैसे कि सिंपल बार डायग्राम में हमें दो बार्स के बीच में कुछ गैप विड्थ दिखती है। हिस्टोग्राम में वैसा कुछ नहीं होता है। हिस्टोग्राम ये हम कंटिन्यूस एक फॉर्म में हमेशा ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे विड्थ होती है, यूजुअली इक्वल होती है सबकी, और एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज होता है। 3 पेशेंट्स आर who have hemoglobin levels from 10 to 10.9. 10 patients are like that whose hemoglobin levels from 12 to 12.9. सो इस तरीके से जो क्लास इंटरवल्स का जो भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको क्लास इंटरवल्स मिल जाएंगे और वाई एक्सिस पे जो कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो हम उसको ड्रॉ करते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज़ जस्ट लाइक अ हिस्टोग्राम, बट इसमें हम सेगमेंट्स को बार में नहीं शो ना करते हुए हम सिर्फ लाइन से उसको कंटिन्यूस लाइन से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर फॉर्म बाय प्लॉटिंग लाइन्स बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ द बार्स ऑफ हिस्टोग्राम। द हिस्टोग्राम शुड हैव इक्वल widths and the line should extend down to at the right and left extreme of the data। ओके, तो ये सिंपली हिस्टोग्राम जैसा ही होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ इसको लाइन से शो करते हैं। नाउ लाइन डायग्राम। सो लाइन डायग्राम ये जो होता है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू टाइम पॉइंट हम इसको हमेशा दिखाते हैं। जो भी डेटा समय के हिसाब से बदलता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है, उसको हम लाइन डायग्राम से शो करते हैं। डायग्राम इज ड्रॉन बाय टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस टाइम, फॉर एग्जांपल ईयर्स, मंथ्स और डेज ऑफ द वीक, एंड ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एनी इंडेक्स और एनी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल लाइक एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल हो सकता है, बर्थ रेट हो सकता है, डेथ रेट हो सकता है। सो डिस्प्लेज हाउ अ वेरिएबल हैज चेंज ओवर टाइम। तो बेसिक थिंक यह है लाइन डायग्राम में कि डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम पॉइंट किस तरीके से उसका पैटर्न, किस तरीके से उसका ट्रेंड ये चेंज होता है, ये हम लाइन डायग्राम में से शो करते हैं। हियर इज द एग्जांपल ऑफ लाइन डायग्राम। नंबर ऑफ स्मीयर पॉजिटिव न्यू लेप्रोसी केसेस रजिस्टर्ड एट द एक्वात म्यूनिसिपल लेप्रोसी हॉस्पिटल मुंबई। डेटा फ्रॉम 1985 टू 1995 का हमारे पास डेटा है। सो यहाँ पे अगर देखें तो वेरिएबल हमारा ईयर में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे ईयर्स एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस जो होंगे वो होंगे वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से समय के हिसाब से हम देख सकते हैं कि केसेस किस तरीके से कम होते होते उसका डाउनफॉल हुआ है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जनरली हम लाइन डायग्राम शो करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2001। तो इसमें देखिए हम लाइन डायग्राम का इस्तेमाल कंपेरेटिवली भी कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएबल्स को हम एट अ टाइम पॉइंट के हिसाब से चेंज होते हुए भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट अकॉर्डिंग टू ईयर किस तरीके से उसका पैटर्न ये ट्रेंड ये चेंज हुआ है हम लाइन डायग्राम में देख सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ डायग्राम इज पिक्टोग्राम और पिक्चर डायग्राम। तो ये जनरली कोई पिक्चर्स या फिर साइंस जो होते हैं विद हेल्प ऑफ साइंस एंड पिक्चर्स इसको हम शो करते हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिया है इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पे एक इन्फेंट बेबी का जो साइन है वो शो कर रहा है 50 इन्फेंट डेथ्स। ओके, तो 1960 में हमें यहाँ पे 3 बेबीज़ का साइंस दिखते हैं। मतलब क्या कि 150 इन्फेंट डेथ्स हुई है 1960 में, 100 डेथ्स हुई है 1980 में और 2002 में 50 इन्फेंट डेथ्स हुई है। तो इस तरीके से पिक्चर डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है।
एंड नेक्स्ट वन इज मैप डायग्राम और स्पॉट मैप्स। तो बेसिकली मैप डायग्राम ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरियाज। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट्स या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो मैप्स होते हैं उसके हिसाब से विद द हेल्प ऑफ दैट मैप्स ये डायग्राम्स हमेशा शो किए जाते हैं। If we talking about this example is incidence of fluorosis in different states of India। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन को अलग अलग कलर से शो किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले पर्पल कलर को जो शो किया है वो है लेस देन 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, इसमें 4 स्टेट्स आते हैं। देन ऑरेंज कलर जो शो किया है उसमें 30 to 50% डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड। ओके, तो इस तरीके से मैप डायग्राम का इस्तेमाल होता है।